प्रीवियस वीडियो में हमने इस परचेज इनवॉइस प्रिंट को डिजाइन किया था, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल में भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल हो तो उस पे भी आप यहाँ पर उसको प्रिंट कर सकते हैं। जो मेरे पास यहाँ पर ये एप्सन प्रिंटर भी इंस्टॉल है, ये ज़ेब्रा वगैरह ये जो प्रिंटर्स है, तो ये हमारे पास है हाउ टू प्रिंट द परचेज इनवॉइस। तो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी शो द ऑल परचेज लिस्ट। So let's get started. Stop the application, go to the Solution Explorer and then Controller and click on Purchases. So now scroll up and here right below this public action result all purchases, and then copy the validations, copy this code, copy all this code with this supplier invoices. Okay, so now scroll down and paste here. Okay, but remove this one line. Okay, so now right here return view, and then get all the purchases from database. So now or all purchases and then equal to db.tbl supplier invoices dot where s dot company id is equal to company id, and then s dot branch id and then equal to branch id. So यहाँ पर हमारे पास जो रिट्रीव होगा ब्रांचेज परचेजेस लिस्ट, उसमें हमारे पास ओनली रिट्रीव होगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस। मींस एक कंपनी में एक सेलेक्टेड ब्रांच की जितनी भी परचेजेस इनवॉइसेस है वो यहाँ पर रिट्रीव होगा, और यहाँ पर हमें फॉर परचेजेस लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, और लिस्ट यहाँ पर हमें बनाना होगा इस इनवॉइस डिटेल का। सो देन यहाँ पर इसको सेव कीजिए और ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। या अगर हमें यहाँ पर फुल डिटेल नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमें जो है सॉरी नॉट दिस इनफ, हमें जो है इसकी डिटेल नहीं, हमें यहाँ पर परचेज इनवॉइसेस डिटेल जो है वो चाहिए। या अगर आपको सिर्फ इनवॉइस हेडर भी चाहिए तो यहाँ से भी आप जो है उसको भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप इसको जो है रिट्रीव कर सकते हैं। मींस इसमें परचेज प्रिंट इनवॉइस एमवी में, सो हर इनवॉइस की इतनी डिटेल जो है वो सेव होगा, और फिर उसके बाद जो है आप उसे जो मुख्तलिफ तरीके से जो है आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जो है फुल डेटा जो है जो हमारे पास यहाँ पर है, हम इसको जो है सेट करेंगे। सो नाउ कॉपी दिस कोड, यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए एंड देन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर जो है बिलो दिस यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर इसको पहले इसको खत्म कीजिए, या कॉपी दिस, सॉरी रिमूव दिस, और यहाँ पर फॉर ईच, और फॉर ईच में हमें इसको सेट कीजिए। ओके, और यहाँ पर ये सप्लायर इनवॉइस, सो नाउ कॉपी दिस, और यहाँ पर इसको सेट कीजिए, देन कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड देन set this. Okay, so once the detail is retrieved, then यहाँ पर जो लिस्ट हमने बनाया है
सॉरी, इसका लिस्ट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। सो नाउ इस लिस्ट क्रिएट कीजिए एंड देन इसमें अब हमें इसको सेव करना है। सो नाउ डॉट ऐड, और ऐड में हमें ये परचेज इनवॉइस हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सब परचेज की जो है फुल डिटेल यहाँ पर रिट्रीव होगा, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। सो नाउ अब हमें इसको यहाँ पर जो लिस्ट है हमारे पास, हमें इसको पास करना है इस व्यू को। सो वंस इट्स कंप्लीट देन राइट क्लिक हियर एंड ऐड द व्यू, all purchases and add. ओके, सो हमें यहाँ पर लिस्ट को शो करना है। तो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट में है। सो नाउ गो टू द टेम्पलेट वेयर द टेम्पलेट इज लोकेटेड इन कंप्यूटर। सो नाउ यहाँ पर मेरे पास टेम्पलेट जो पड़ा हुआ है वो यहाँ पर टेम्पलेट में है। सो नाउ टेम्पलेट को ओपन कीजिए। So now scroll down, go to the page, go to the extra and click on the e-commerce and then click on the order. So हमें इस जो यहाँ पर व्यू है इस तरीके से हमें वहाँ पर इसको शो करना है। सो ये इस पेज जो है इसको ओपन कीजिए, e-commerce order. So now open, go to the app and then e-commerce order. So right click, edit with any editor and then copy these orders and then find this. Okay, so here this is the section and inside and this. So now copy this table with this div tag. So now copy this code. Okay, so now copy, यहाँ पर आप चेक कीजिए कि हमने टेबल से इसको कॉपी लिया, बिल्कुल टेबल से। सो नाउ कॉपी द कोड एंड कंट्रोल ए एंड देन पेस्ट द कोड है। सो नाउ सेव द कोड और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे मॉडल। सो नाउ ऐड मॉडल, then ERP dot models dot purchase print purchase इनवॉइसेस। लेकिन हमें यहाँ पर इसको लिस्ट में चाहिए, तो यहाँ पर आएगी नंबरेबल और ये हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में रिट्रीव हो जाएगा। ओके, सो नो सेव द चेंजेस। और यहाँ पर जो ऑर्डर्स है हमारे पास, ये परचेज ऑर्डर हम करते हैं, परचेज ऑर्डर्स एंड सेव द चेंजेस। Once open the code again and check. Okay, all the jQuery is okay, leave it. Now here is the order ID, purchased on, this is the date, and then client name, amount, quantity, shipment, status, overview. So now here add for each and then model dot first remove this, close and then reopen again. Right click here and go to the view and then scroll down or right here the for each and then model dot
Okay, here is the list. So now then model, and model, inside in a model, copy this row and paste here, and here is the order ID. So item dot at the right, item dot invoice header dot invoice number, and then date. So now at item dot invoice header dot invoice date, and toString for show the day, then month, and then year. The third one is a client name. So client node, here we are showing the supplier. So here is the supplier. Okay, so now supplier, so right here, copy this and paste here, and then dot supplier ID. So now dot supplier name, and here is the amount of purchase order. So now dot total amount. Here is the total amount, here is the quantity. So I don't need here the quantity, I need here the estimate text, and this is the total amount, estimate is shipment, and below this, but here I am showing the subtotal, and at last we show the total amount. So now here is the subtotal, so write here that not the total amount, datum subtotal amount, supplier name, then subtotal, and here is the estimate, subtotal and the estimate text, and then the shipment, dot shipment fee, and on the last here dot total amount, and after total amount this is the status. So the status is here is the standby one, the one option is so total amount, and then the TD, and this one is also the TD. Also remove these all rows. Now copy all these rows and remove. Okay, the status in view. Okay, but the view is here, any view. We are going to print the report. So here in a search at HTML or at at the HTML dot action link, and then link text, so dot action,
here we need just an action. So now right here in actions, go to the purchase controller, and an action inside this name. So now copy with this name and go to the all purchases and paste here. So here this is the action, and remove this and comma and then new, and this is the route parameter is equal to item dot supplier header invoice header dot supplier invoice ID. Okay, so now that's it. Okay, so now save the changes and run the application. Go to the Solution Explorer, and then Solution Explorer, and then go to the layout, shared, and the layout, and in layout below scroll down and purchase, Control F, purchases, there is the purchases. So now scroll down, and this is the all branch suppliers. Purchase stock product, and now change here, this is the all purchases. So now all purchases, and then add URL dot content, and then this comma and then slash purchases, this is the controller name, slash, and then then copy here and write this all purchases. So now all purchases. Okay, and write here also the all purchases orders, all purchases orders, and now show the changes. Okay, so now login, so the changes, and then login and purchase, and here see the all purchases. So now click here, so see, okay, data table warning, ID table. Okay, so this is the okay, so this is the list of purchases orders. In a coming video we are going to fix this issue. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.